Welcome back to my channel Biomix Hub. I hope you are doing well. In this today's video we are going to discuss about some of the questions of mRNA processing from 2001 to 2025. I hope this video will be beneficial for your practice, and if you like this video please don't forget to subscribe. So let's get started with the question, guys. So this is our first question of 2001. In eukaryotes 5' capping in mRNA is required for: first, initiation of transcription, initiation of translation, intron removal, termination of transcription. So the correct option for this question is initiation of translation. So it is not required during the process of transcription. After the transcription, the mRNA is being capped, by which it will be transferred. It will get a signal that the mRNA is now ready. There are two types of modifications in the mRNA. Like in the 5' there will be a cap, and in the 3' there will be addition of poly A. So now it will get a signal that now they are ready to transfer from the nucleus to the cytoplasm, and now they are ready for the process of translation. So 5' capping of mRNA is required for initiation of translation. So now let's discuss the next question. During mRNA processing, splicing is mediated by, ये जो splicing जो हो रहा है after the mRNA is processed, it is carried by which RNA? Okay, it is carried by SNO RNS. Next question. Now let's discuss the next question. Regarding gene expression of eukaryotes, the statement are correct. यहाँ पे कुछ statements दिया गया है gene expression के बारे में eukaryotes में, and we have to find the correct option. First is mRNA and template DNA has the same sequence. ये कैसे possible है? हमारा जो DNA जो present है, it is of two strands. One is working as a template strand and other is the non-template strand. So the RNA polymerase which will come and bind, and they will initiate the process of transcription for the synthesis of mRNA. This mRNA which will be synthesized, it will be complementary with this DNA strand, but it will be similar with this non-template strand. Okay, this non-template strand is also known as coding strand. Okay, this is a non-template strand as well as it is known as the coding strand. Next question. So this statement is the wrong option. Next option, mRNA and protein synthesis can occur simultaneously. Yes, it can occur simultaneously. Processing of hRNA is mRNA. No, this is not the correct statement. Next, RNA polymerase can bind to promoters situated downstream of protein coding genes. ये बोल रहा है कि RNA polymerase जो present है, it can bind to promoters situated downstream of protein coding gene. ये बोल रहा है कि जो जहाँ भी protein coding genes जो present है, उसके downstream polymerase आकर bind कर सकता है promoter को. Yes, this is the correct statement. Next, that is flexibility over only at last base of codon. No, this is not the correct statement. So option 3 is the correct statement for this question. Now let us discuss next question. Which molecules is continuously transported from nucleus to cytoplasm? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कौन ट्रांसफर होता है कंटिन्यूसली? लाइक वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द nucleus. It takes place in the nucleus. After the RNA has been synthesized in the nucleus, there are certain modifications like 5' capping and 3' polyadenylation. After that, it is being transferred into the cytoplasm for the formation of proteins. So this is the mRNA which is being continuously transferred from nucleus to the cytoplasm. Now let us discuss the next questions. A gene consists of two introns. Okay, there are two introns. Two introns are present. 5' UTR and 3' UTR is present. The probability of exons will be, ये बोल रहा है कि यहाँ पे 5' UTR present है और यहाँ पे है 3' UTR, और इनके बीच प्रेजेंट है टू इंट्रॉन्स. ये है इंट्रॉन 1, ये है इंट्रॉन 2. सो ये पूछ रहा है कि कितना प्रोबेबिलिटी है, हाउ मेनी एक्सॉन्स विल बी प्रेजेंट. सो यहाँ पे एक एक्सॉन प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे एक एक्सॉन, यहाँ पे भी एक एक्सॉन और यहाँ पे भी एक एक्सॉन प्रेजेंट हो सकता है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सॉन्स इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is necessary for transfer of mRNA from nucleus? अभी ही हम डिस्कस किए थे कि जब कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में,
after the synthesis of the mRNA, it will have some modifications like 5 prime capping and 3 prime polyadenylation for the transfer from nucleus to the cytoplasm. So इसका आंसर होगा 5 prime capping. 5 prime capping is necessary. Next question. Discuss the seventh question. Which of following is reactive center for splicing of exons during processing of mRNA? ये पूछ रहे हैं कि mRNA का जो splicing हो रहा है during that time, what are the factors they are required? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक mRNA प्रेजेंट है जिसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ और वी कैन टेल जिसका प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग नहीं हुआ. सो फॉर द स्प्लाइसिंग, ये स्प्लाइसिंग के लिए कुछ RNPs, SNRNPs का रिक्वायरमेंट है. सो ये जो SNRNP जो है इट इज U1, U2, U4, U5 और U6. ये कुछ SNRNPs हैं which are required during the splicing of mRNA. That is a adenine which is present और इस adenine के पास आकर बाइंड होगा branch point which is known, this is the branch point where the protein BBP comes and bind. और 5 prime end के तरह U1 SNRNP present रहेगा and other factor which is known as U2AF65 और 35 प्रेजेंट रहेगा हमारा 3 प्राइम एंड में. ये जो 35 जो प्रेजेंट है इट इज एट इज नियर द 3 प्राइम एंड. नेक्स्ट कम्स द SNRNPs U2 जो प्रेजेंट, ये जो U2 जो प्रेजेंट है when it comes it will release the BBP which is known as the BBP protein and it will come and bind in this A region. Okay. After this binding of the U2, the other factors like U6, U4, U5 will come and bind. And after this binding, they will release the U2AF65, 35 from the subunit. After that, the U2 will interact with, or the reaction will take place between the U2 and U6. In this way, the splicing of the exon will take place. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? Which of the following is a reactive center for splicing of exons during processing of mRNA? So U1 or U5 no. Branch point U2, U6. Yes, this is the correct statement. यहाँ पे कौन इन्वॉल्व थे? यहाँ पे इन्वॉल्व थे BBP which is in the branch point, U2 और U6. U2 जो प्रेजेंट है it is near the branch point and ये U2 react करेगा U6 के साथ. Okay, so we have got this answer, branch point U2 and U6. Now let's discuss the next question. The carboxyl terminal domain CTD of RNA polymerase 2 consists of heptapeptide repeats. ये जो है ये एक heptapeptide repeats contain करेंगे. कौन? This CTD domain of RNA polymerase 2. Other proteins often bind the C-terminal domain of RNA polymerase in order to activate polymerase activity. Yes, there are other different type of factors or different type of transcription factors which bind in this domain to activate the polymerase activity. Which one of the following is not function associated with CTD of RNA polymerase? ये क्या पूछ रहे हैं? इनमें से ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द CTD डोमेन? ये प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्रोमोटर क्लियरेंस, 5 प्राइम कैपिंग, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 प्राइम कैपिंग, यस स्प्लाइसिंग, प्रोमोटर क्लियरेंस, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन. प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन के लिए टाटा बॉक्स रिस्पॉन्सिबल था एंड द RNA polymerase was binding with the promoter region when the sigma factor was binding with the core enzyme. जब कभी भी sigma factor जो है it was binding with the core RNA polymerase, during that time it is having the ability that it will specifically bind in the promoter region. Okay, now the next question. The 5 prime cap of RNA is required for stability of RNA only, stability and transport of RNA. Yes, this 5 prime cap is required for the stability as well as transport of RNA. Transport of RNA only no. Methylation of RNA no. Now the next question. In humans, protein coding genes are mainly organized as exons and introns. There are intergenic regions that transcribe into various type of non-coding RNA. Some introns may harbor also transcription units, which are, ये क्या बोल रहे हैं? हमारा जो ह्यूमंस में जो प्रेजेंट है प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो प्रेजेंट है, दिस आर बाय बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. ओके, देयर आर इंटरजेनिक रीजन्स, कुछ इंटरजेनिक रीजन्स प्रेजेंट है
that transcribe into various non-coding RNA. Non-coding RNA के मतलब क्या है? That means it is not coding for any of the genes. Okay. Some introns में harbor also transcription unit. ये बोल रहे हैं कि कुछ इंट्रॉन्स का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी हो सकता है. Which are always other protein coding genes. ये प्रोटीन कोडिंग जीन्स तो नहीं हो सकता है इंट्रॉन्स. Protein coding genes are RNA coding genes? No. Always RNA coding genes? No. It cannot be always RNA coding genes, but it can be pseudogenes. Pseudogen का मतलब क्या है? That there will be production of some of the proteins or some of the genes, but there will be no function of this genes. They are known as the pseudogenes. The correct option is the D option. Next, let's discuss the next question. RNA editing, a post-transcriptional process, is achieved with the help of guide RNAs. Which one of the following statement about the process is not true? यहाँ पे कुछ RNA editing के बारे में पूछा गया है और ये बोल रहा है कि guide RNA के बारे में कौन सा statement true नहीं है. Guide RNA dependent RNA editing happens in the kinetoplast of DNA. Yes, this is a correct statement. Next, guide RNA is involved in chemical modification of tRNA. ये बोल रहा है कि guide RNA का जो modification हो रहा है वो tRNA में modification हो रहा है. It is not in the tRNA, it is in the messenger RNA or it is in the mRNA. So यहाँ पे क्या पूछा था? It was asking about the incorrect option. So this is the incorrect option. Next, the process involves insertion or deletion of uridine. हाँ, guide RNA के through we can insert or delete uridine. So this is the correct option. Next, sequence edited may be re-edited using second RNA. हाँ, अगर एक sequence को edit किया गया है by using the guide RNA, again फिर से वो sequence को target करके फिर से editing हो सकता है by using the second guide RNA. So this is also the incorrect. Sorry, this is the correct statement. Okay. So next, in trypanosomes, a 35 base leader sequence is joined with several different transcripts making functional mRNAs. The leader sequence is joined with other RNAs by the process of transsplicing. यहाँ पे जो दो RNA अगर join होकर एक mRNA का formation करेंगे, then that is by the process of transsplicing. Okay. Next question. Pre-mRNAs are rapidly bound by snRNPs. यहाँ पे बोल रहे हैं कि pre-mRNA जो present है, जो कि mature नहीं हुए हैं, they are bounded by snRNPs, which carry out dual steps of splicing. यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लाइसिंग में दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. That removes the introns. यहाँ पे इंट्रॉन का रिमूवल हो रहा है and joins the upstream and downstream exons. ये क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ जो exons जो प्रेजेंट है उन्हें ज्वाइन भी कर रहे हैं and they are also removing the introns. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन प्रोसेस के बारे में and we have to find out the correct statements from it. Okay. First, almost all introns begins with GU and ends with AG sequence, and hence all the GU और AG sequence are spliced out of RNA. यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंट्रॉन जो रिमूव जो हो जाएगा, it is starting with GU and it is ending with AG. So this GU and AG sequence जो प्रेजेंट है वो रिमूव आउट हो जाएंगे. यहाँ पे हम देखेंगे ये जो प्रेजेंट है ये एक प्री mRNA प्रेजेंट है. यहाँ पे देखो ये है हमारा एक्सॉन, यहाँ पे भी है हमारा एक्सॉन और बीच में हमारा इंट्रॉन. ये इंट्रॉन जो प्रेजेंट है वी कैन सी हियर दैट इट इज स्टार्टिंग विद GU एंड इट इज एंडिंग विद AG. सो यहाँ से GU से स्टार्टिंग और AG तक जितना भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा दे विल बी रिमूव्ड आउट. ओके, यहाँ पे वही स्टेटमेंट्स पूछा गया है. सो दिस B ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, U2 RNA recognizes important sequence at the 3' acceptor end of the intron. Yes, ये हम अभी ही डिस्कस किए थे. ये जो U2 है it is bounded towards the 3' end. Okay, so the second option is also the correct option. Next, जैसे कि A और B, ये A है ये B है, जैसे A और B करेक्ट हो गया, we have got the answer that A and B is the correct answer. Next option, the spliceosome uses ATP to carry out accurate removal of intron. नहीं, हमारे जो splicing का reaction जो present है it is by the transesterification reaction. यहाँ पे कुछ ATP का involve और energy का involvement नहीं होता है. So it is the incorrect option. An unusual linkage with 2' OH group of guanosine with intron form lariat structure. नहीं, this is also the incorrect option. Okay, now let's discuss the next question. यहाँ पे दिया गया है कि
HeLa cells extract was used to study transcription of gene X from 6 introns. यहाँ पे HeLa cells में क्या किया गया है, एक जीन था जिसका नाम है जीन X एंड इट इज हैविंग 6 इंट्रॉन्स, उसका ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। RNA polymerase II complex containing all associated proteins were isolated from actively transcribing system and subjected to proteome analysis. Results showed the presence of both spliceosome and capping enzyme. यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, प्रोटियोमिक्स का जो प्रोटियोम एनालिसिस जो किए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उसका एनालिसिस किए। यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, यहाँ पे फाइंड आउट हुआ कि बोथ स्प्लाइसोसोम और कैपिंग एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स। व्हेन ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन वाज इनिवेटेड बाय फ्लेवोपाइरिडोल, यहाँ पे क्या गया, ट्रांसक्रिप्शन का जो एलोंगेशन जो होता है उसको इनिवेट किया। पोलीमरेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओनली कैपिंग एंजाइम, यहाँ पे कैपिंग एंजाइम जो प्रेजेंट था, कैपिंग एंजाइम को इनिवेट किया ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन का एलोंगेशन भी नहीं हुआ। व्हेन फॉस्फोराइलेशन ऑफ द CTT डोमेन ऑफ पोलीमरेज 2 was inhibited by a kinase inhibitor, the complex contained neither splicing nor capping enzymes. यहाँ पे क्या हुआ, जब CTT डोमेन को इनिबिट किया गया, फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTT डोमेन को इनिबिट किया गया बाय ए काइनेस इनिबिटर, द कॉम्प्लेक्स कंटेन, यहाँ पे स्प्लाइसिंग और कैपिंग एंजाइम्स दोनों का कॉम्प्लेक्स का एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। सो द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन X इज कपल्ड टू mRNA कैपिंग। यस, अगर इसको इनिबिट करने से इसका प्रेजेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस जीन X which is present, it is related to the mRNA capping. Okay, next, transcription elongation is coupled to splicing. Yes, this is also the correct option. Next, phosphorylation of CTT is required for the recruitment of capping and splicing enzymes. हाँ, CTT डोमेन का जो phosphorylation रहता है, डिफरेंट सेरिन के पोजीशन में डिफरेंट फॉस्फोराइलेशन होता है। लाइक इट कैन बी फॉस्फोराइलेशन इन द फिफ्थ पोजीशन ऑफ सेरिन और सेकंड पोजीशन ऑफ सेरिन। यहाँ पे अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, देन इट कैन कॉज कैपिंग एज वेल एज एलोंगेशन एज वेल एज स्प्लाइसिंग ऑफ द mRNA. So the ABC is the correct statement. Next, ये यहाँ डी ऑप्शन में क्या दिया था, बोथ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA ऑकर साइमल्टेनियसली। नहीं, कैपिंग और स्प्लाइसिंग साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, स्प्लाइसिंग होने के बाद एंड देयर इज ए capping and it is being transported into the cytoplasm for the formation of protein. So यहाँ पे A option is the correct option. ठीक है. Sequence in some of the protozoan parasite is transcribed elsewhere in the parasitic genome and gets joined with several transcript making a functional mRNA. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लीडर सीक्वेंस जो प्रेजेंट है डिफरेंट प्रोटोजोन से मिलकर बन रहा है कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स एंड दे आर जॉइंड टुगेदर टू मेक ए फंक्शनल mRNA. द जॉइनिंग ऑफ द टू ट्रांसक्रिप्ट्स ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे अगर दोनों अलग अलग जगह से ट्रांसक्राइब होकर अगर ज्वाइन होकर एक mRNA फॉर्मेशन होंगे, सो दैट टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग इज नोन एज ट्रांसस्प्लाइसिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The 3' end of most eukaryotic mRNA is defined by addition of poly-A tail. A processing reaction called polyadenylation. यहाँ पे क्या हो रहा है, 3' end पे polyadenylation हो रहा है. The addition of poly-A tail is carried out by enzyme poly-A polymerase. Okay. Given below are few statements about this process. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक polymerase प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 3' एंड में पोलीएडिनाइलेशन करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है और इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन, poly-A polymerase is a template independent enzyme. Yes, as this is a modification, it is modified after the transcription has been done. This is being modified, so it does not require any template for it. So the first option is the correct option. So जैसे कि first option हमारा correct option हुआ, then we are getting the correct option, that is A, and E is the correct option. Now let us see what this E statement is telling. Poly-A polymerase catalyzes the addition of 8-AMP from ATP
to the 3' end of mRNA. हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है. ये जो polymerase जो present है, it is utilizing the ATP and it is giving the AMP in the 3' end. So यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल गया. ठीक है. Let's discuss the next question. An intron in a yeast reporter gene carries a mutation in the splice site branch point. ओके, यहाँ पे ये एक ब्रांच पॉइंट है और यहाँ पे हुआ है एक म्यूटेशन. To suppress the mutation, a library of point mutants of snRNAs were introduced into the mutant strain. The suppressor is most likely to have a point mutation N. ये बोल रहा है कि ये जो म्यूटेशन जो हुआ है ये कौन से snRNPs पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है. As we know that the SU2 snRNPs is the main thing which is used during the process of splicing in the branch site. So the correct option is U2 snRNA which is binding to the branch point. Okay, so now the next question. Eukaryotic mRNAs are modified to possess a 5' cap structure. Eukaryotic का जो mRNA जो present है उसमें कुछ modification हो रहा है, like it can be 5' capping as well as 3' polyadenylation. यहाँ पे कुछ statements दिया गया है 5' capping के बारे में and we have to find the incorrect option. Okay, first statement, it protects the mRNA from 5' to 3' exonuclease attack. Yes, it is the correct option. ये जो mRNA जो present है अगर उसका modification नहीं हुआ और we can tell अगर उसका capping as well as polyadenylation नहीं हुआ, then there are various types of exonuclease which are present. They will attack and they will degrade the mRNA. So for protecting them from this attack, there are certain modifications like 5' capping as well as 3' polyadenylation. Now the next statement, it facilitates splicing of nascent transcript. अगर इसका 5' का अगर capping हुआ, then it will help for the splicing. Yes, this is also the correct option. Next, it protects the transcript from degradation by RNase 3 family enzyme. ये बोल रहा है कि due to this modification, ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो प्रेजेंट है उसको RNase 3 फैमिली एंजाइम से वो प्रोटेक्ट कर रहा है. नहीं, दिस RNase 3 फैमिली इट इज ए एंडोन्यूक्लियस. इट इज ए एंडोन्यूक्लियस और ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है. हमारा जो मॉडिफिकेशन जो हो रहा है इट इज फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द exonucleases जो कि साइड से कट कर रहा है. Okay, this RNase 3 which is present, it is a endonuclease, that means it is cutting from the middle. So this is the incorrect option. Next, it facilitates attachment to 40S subunit of ribosome. Yes, this is also the correct option. So अगर 40S subunit से वो अटैच हो रहा है मतलब क्या है? It is initiating the process of translation for the protein synthesis. Okay, now the next question. Which one of the following statement about mRNA export from the nucleus is incorrect? ये पूछ रहा है कि incorrect option कौन सा है. Okay, cellular pre-mRNAs with introns are generally not exported out of the nucleus. Yes, it is a correct statement. अंदर क्या होगा? There will be splicing. There will be removal of the non-coding part. Okay, then only there will be processing of the mRNA, then they will be transferred out from the nucleus into the cytoplasm. DBP5 is a RNA helicase that releases mRNA from the transport complex. Yes, this is also the correct option. ATP hydrolysis is required for mRNA transport across the nuclear pore complex. Yes, this is also the correct option. Phenylalanine glycine protein of the nuclear पोर कॉम्प्लेक्स आर नॉट इन्वॉल्व इन mRNA एक्सपोर्ट. नहीं, हमारा जो mRNA न्यूक्लियर पोर जो प्रेजेंट है वहाँ पे फिनाइलएलानिन और ग्लाइसिन प्रेजेंट रहते हैं विच इज हेल्पिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो दिस डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. Discuss the next question. The tri-SNRNP particles is composed of. हमारा जो स्प्लाइसिंग हो रहा है वहाँ पे 3 SNP RNPs इन्वॉल्व रहते थे. वो कौन कौन से SNRNPs है? Like we can see here that it is U6, U4 and U5. ये दोनों एक साथ आकर वो स्प्लाइसोसोम में काम कर रहे थे. ठीक है, सो यहाँ पे we can see that
U4, U5, U6 यहाँ पे D ऑप्शन पे है. So D option is a correct statement. Now the next question. Various type of processed eukaryotic endogenous mRNA are mentioned below. यहाँ पे क्या दिया है, यूकैरियोटिक mRNA जो प्रेजेंट है वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है एंड आफ्टर दैट ओनली इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोसोल. सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन सा मॉडिफिकेशन के बाद ही एक mRNA कैन बी ट्रांसफर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि अनस्प्लाइस्ड एंड पॉलीएडिनाइलेटेड mRNA. पॉलीएडिनाइलेटेड तो ठीक है, अगर पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होगा देन इट विल नॉट बी ट्रांसफर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. अगर अनस्प्लाइस्ड है वो कैसे जा सकता है साइटोप्लाज्म में, लाइक वी आर हैविंग देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड अगर मॉडिफिकेशन अगर नहीं होगा, अगर जो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा, अगर वो एलिमिनेट नहीं होगा तो बाहर आकर वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करेगा. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट 2, polyadenylated and capped. हाँ, polyadenylated और capped they are responsible, but again it is giving here the unspliced mRNA. So this B option is also the incorrect option. Next is C. polyadenylated, ठीक है, polyadenylation हो चुका है, spliced, splicing हो चुका है, only the coding region is present over here. Next is the capped mRNA. So C option is the correct option. यहाँ पे C option करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूकैरियोटिक mRNAs have a enzymatic appended cap structure consisting of 7-methyl guanosine residue joined to the initial 5' nucleotide of the transcript. Given below are a few statement regarding capping. ये कैपिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है और इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, कैपिंग प्रोटेक्ट्स द mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय 5' एक्सोराइबोन्यूक्लियसेस. हाँ, कैपिंग क्यों हो रहा है, ताकि वो एक्सोन्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं वो एक साइड से फ्रॉम द टर्मिनल एंड दे विल नॉट डिग्रेड द mRNA. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन. सो वी कैन हियर नाउ एलिमिनेट द सी ऑप्शन. Now next, during capping, the alpha phosphate is released from 5' end of the nascent mRNA. It is not alpha phosphate, it is the gamma phosphate. It is gamma phosphate. So the B option is the incorrect option. Here यहाँ पे only B, यहाँ पे सिर्फ B ही है. Next, phosphorylation mediated conformational change in CTD of RNA polymerase 2 enables its binding with capping enzyme. Yes, this is also the correct statement. Capping, अगर यहाँ पे phosphorylation होगा then it is giving a signal that now that should be capping of this mRNA. Now next, D. During capping, a 5' triphosphate bond is formed between the beta phosphate of the nascent mRNA and alpha GTP. Yes, this is also the correct option. So हमारा आंसर कौन सा है, B is the answer because we have to find the incorrect statement. Following statements were made about the post-transcriptional processing of RNA in eukaryotes. यहाँ पे कुछ post-transcriptional modification हो रहे हैं and it is in case of a eukaryote. So we have to find the correct statement from this. The first statement: soon after transcription initiation, RNA polymerase 2 poses 30 nucleotides downstream from the start of initiation until the cap structure is added to the 5' end of the nascent pre-mRNA. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो रहा है वो थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो रहा है, मतलब 30 न्यूक्लियोटाइड जब सिंथेसिस हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम द RNA polymerase halts, वो रुक जा रहा है. कब तक वो रुक रहा है, until the 5' is being protected by the cap, then it again start for the process of elongation. Yes, this is a करेक्ट स्टेटमेंट. अगर यहाँ पे 5' का कैपिंग अगर नहीं होगा देन व्हाट हैपेंस, देयर विल बी डिग्रेडेशन ऑफ दिस mRNA. सो द ए स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज द बी. The 5' splice site are functionally divergent whereas the 3' splices are functionally equivalent. ऐसा नहीं होता है, like the 5' side is also conserved as well as the 3' end is also conserved. It is not divergent. ये particular रहता है, like 5' is also particular for it and 3' is also particular for it. Okay, so this is the incorrect option. Like as we eliminate this B, we are getting this option D as the correct statement. Okay, now let us see the C statement. In addition to helping in recognition of the splice site, the exon defines also function as splicing regulator by allowing pairing and linkage of adjacent 5' 3'
splice site. Yes, this is the correct option. Next, the intron definition mechanism applies only to the larger introns above 500 nucleotide length and assists in achieving alternate splicing. Yes, this is also the correct option. Next, the splicing reaction carried out in vitro have revealed that the first and second transhistorification are reversible. Yes, this is the correct option. Let us discuss the next question. Which one of the following statement about eukaryotic RNA processing is incorrect? Eukaryotic RNA processing के बारे में कुछ statements दिए गए हैं और इनमें से हमें find out करना है कौन सा statements incorrect है. The first statement, termination of transcription occurs co-transcriptionally at the polyadenylation site. ये बोल रहा है कि जो termination जो हो रहा है transcription के time, जो termination जो हो रहा है it is co-transcriptionally at the polyadenylation site. No, it is not the correct option because when the termination is taking place, at first there is a cleavage. Okay, there is a cleavage, and after that there is addition of poly A. That means it is no co-transcriptionally, it is post transcription. The addition of poly A addition is a post translation process. So this is the incorrect option. Next, the second option. So as we got this is the incorrect option, this is the answer for this question. Let's see the other options. Phosphorylation of serine 2 of the RNA polymerase 2 CTD is required for the recruitment of polyadenylation factor. Yes, जब कभी भी serine 2 में phosphorylation होगा, then there is requirement of polyadenylation factor. Next, polyadenylation requires both cleavage at the polyadenylation site and addition of poly है. हाँ, this polyadenylation requires cleavage. At first there is a cleavage is before the termination site and after that there is addition of poly A. मतलब poly A बाद में add होगा. It is a post translation modification. Next, XRN2 is a nucleus that degrades the cleaved RNA to release RNA polymerase 2 from the template. रो डिपेंडेंट रो इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ टर्मिनेशन हो रहा है. रो इंडिपेंडेंट में क्या होगा, XRN2 जो है इट विल क्लीव आफ्टर देयर इज ए कट. ये जो XRN2 जो प्रेजेंट है इट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड इट विल डिग्रेड द RNA. Okay, so this option A was the correct statement for this question. Let's discuss the next question. In trypanosoma, some of the introns generate Y-shaped structure. यहाँ पे क्या हो रहा है, Y-shaped structure generate हो रहा है in place of a lariat. Such structure is generated during it is transplicing. जब कभी भी transplicing होगा, there will be involvement of two types of mRNAs will be joined for the formation of a single mRNA. और यहाँ पे कुछ modifications होगा and this is in the Y-shaped. Okay. Now let's discuss the next question. Following statements were made about mRNA splicing. यहाँ पे कुछ statements दिए गए हैं जो कि splicing के बारे में है. ठीक है. First option is involvement of cis-acting branch point site present near the 3' end of each exon is essential for splicing. ये क्या बोल रहा है कि ये जो ब्रांच पॉइंट जो प्रेजेंट है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट नियर द 3' एंड इट इज एसेंशियल फॉर स्प्लाइसिंग. ये नहीं हो सकता है. इट कैन बी present near the 5' end also as well as in the 3' end also. So this is the incorrect option. Next, in the first step of splicing reaction, 2' OH of the conserved U at the branch site act as a nucleophile to attack the phosphoryl group of the conserved G in the 5' splice site. So यहाँ पे जो 2' OH of the conserved U at the branch site, यहाँ पे जो present है it is not conserved U. यहाँ पे ये क्या होगा, it will be adenine. Already we have discussed that. यहाँ पे जो branch point में जो present होगा it is not U, it is adenine. It is adenine. So it was the incorrect option. जैसे ही incorrect option B है, we can eliminate this option as well as this option. Already we have eliminated A over here, so this third option is also incorrect. So we got the answer that B is the correct statement. Okay. Now as depicted in the figure below, the sequence of ribosomal mitochondrial cytochrome oxidase subunit 2 COX2 mRNA does not match the sequence of the COX2 gene. यहाँ पे क्या हो रहा है, COX2 mRNA का जो sequence present है ये इनका जीन के साथ मैच नहीं हो रहा है. The mRNA contains 4 additional U's. 4 additional U's present है which are not represented by T's in the gene.
and these 4 U's are presumably added by RNA by editing. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो U जो प्रेजेंट है, यहाँ पे U और यहाँ पे U जो प्रेजेंट है, दे आर हाईलाइट, दे आर, यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिखा गया, यहाँ पे U जो प्रेजेंट है, दे आर बीइंग added by some RNA modifications. यहाँ पे कुछ statements है about the RNA editing. We have to identify the correct statement from this. Okay. So the first option, RNA editing can add or remove U's from the targeted mRNA. Yes, this could be the possible statement that it can remove or add some of the U's. Okay. Now the next statement. Editing occurs in 5' to 3' direction by successive action of one or more guide RNAs. It is telling that it will occur in 5' to 3' direction. Why always in 5' to 3' direction? It is not about the 5' to 3' direction. And the other thing is that direction by successive action. Successive action मतलब क्या है? Side to side. Okay. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो addition हुआ है U का, यहाँ पे दोनों U का addition हुआ है, then it is leaving something GUA का, यहाँ पे नेक्स्ट U यहाँ पे है, सो इट इज नॉट यूजिंग दिस G, इट इज हियर द मॉडिफिकेशन इज इन द अदर पार्ट. लाइक यहाँ पे अगर सक्सेसिव होगा तो यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट अबाउट द सक्सेसिव एक्शन. ओके, जैसे ही बी स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ, वी गॉट द आंसर दैट ए एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए टर्मिनल यूरिडल ट्रांसफर TUTA फैसिलिटेट्स एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा UMPs टू द mRNA ड्यूरिंग एडिटिंग. हाँ, ये जो TUTS जो प्रेजेंट है, इट इज एडिंग द uridine to the mRNA. Okay, let's discuss the next question. RNA editing, a post-transcriptional process, is achieved with the help of guide RNAs. Which one of the following statement about the process is not true? यहाँ पे कुछ RNA editing के बारे में पूछा गया है और ये बोल रहा है कि guide RNA के बारे में कौन सा statement true नहीं है. Guide RNA dependent RNA editing happens in the kinetoplast of DNA. Yes, this is a correct statement. Next, guide RNA is involved in chemical modification of tRNA. ये बोल रहा है कि guide RNA का जो modification हो रहा है वो tRNA में modification हो रहा है. It is not in the tRNA, it is in the messenger RNA or it is in the mRNA. So यहाँ पे क्या पूछा था? It was asking about the incorrect option. So this is the incorrect option. Next, the process involves insertion or deletion of uridine. हाँ, guide RNA के through we can insert or delete uridine. So this is the correct option. Next, sequence edited may be re-edited using second RNA. हाँ, अगर एक sequence को edit किया गया है by using the guide RNA, again फिर से वो sequence को target करके फिर से editing हो सकता है by using the second guide RNA. So this is also the incorrect. Sorry, this is the correct statement. Okay. So next, in trypanosomes, a 35 base leader sequence is joined with several different transcripts making functional mRNAs. The leader sequence is joined with other RNAs by the process of transsplicing. यहाँ पे जो दो RNA अगर join होकर एक mRNA का formation करेंगे, then that is by the process of transsplicing.